So hello again to everybody that joined us to the Shoonya and I know first webinar. We're going to start in a few minutes. And we have a really interesting webinar today. We're going to talk about the markets. We're going to talk about what happened in August in the Indian market and what's the algorithm sees to will happen in September. We'll get to that through the end of the webinar. And I see that Keshav is joined us. Hello, Keshav. How are you? Yeah, all good, Ben. Hi, Aaron sir. Hi, Ben. How Hi, are you? hi, Kasha. How are you? Good to All see good, you. all good. Same here, Yeah. same here. Yes. Uh, And okay, so we can start. Almost around lots of people are joined here. So, hello everyone. Welcome आप सभी का शून्य एंड आई नो फर्स्ट के इस वेबिनार पर। और यहाँ पर आज हम समझेंगे इंडियन मार्केट्स को और समझेंगे किस तरह से हम किसी इंटेलिजेंस का यूज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इस मार्केट को और ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किस तरह से हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और बेहतर बना पाएंगे आई नो फर्स्ट के साथ। सो अभी का जो हमारा मार्केट चल रहा है कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छी एक रैली देखने को मिली मार्केट में, हमें एक नए नए ऑल टाइम हाईज बनाए मार्केट ने। बट ठीक है, मार्केट हमेशा एक करेक्शन फेज में जाता है। कुछ तरह की करेक्शन जरूरी भी है ताकि और एंट्रीज मिले, डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स अवेलेबल हों, डिस्काउंटेड मार्केट हो ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। और वैसे भी अब तो रिटेल पार्टिसिपेशन जो है हमारे मार्केट में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, जिस वजह से हमें मतलब हम एक अच्छी हेल्दी मार्केट में हैं, क्योंकि ग्लोबल कंसर्न को भी हम लोग कई बार एलिमिनेट कर जाते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से। सो अभी जो हमें देखने को मिल रहा है डाउन साइड में भी, इसमें कुछ फेडरल रिजर्व और इसमें रेट कट्स जो होंगे उससे रिलेटेड हमें कुछ प्रेशर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, अभी 17 सितंबर की मीटिंग है फेडरल रिजर्व की, फिर उसमें क्या निकल के आता है। रेट कट्स होंगे तो फिर से हमें और भी नए लेवल्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। बट ठीक है, देखते हैं हम एआई को किस तरह से इसमें लेवरेज कर पाते हैं। सो ओवर टू यू यारन सर। या Hey, thank you very much, Kasha. We have a very interesting webinar today. We are going to assist you and to provide you information how to utilize the AI predictive algorithm in the best way, how to use the different indicators that the algorithm is generating, and basically how you can utilize the AI algorithm in order to identify opportunities among the Indian stock market. The large cap Indian scrips, the mid cap, and also the small caps. We will start the webinar with a quick introduction of I Know First. Today we have here also from the I Know First side Ben Rubin, the head of our advisory team. Ben is going to provide to you a lot of insights today. So stay tuned until the end of the webinar because Ben prepares several surprises at the end, including some important insights that you should use in the coming months, basically. yes, and one quick yes, thing, if you have any questions, feel free to ask us through the Q&A. I see a lot of people raising hands and try to use the chat. No, try to do it through the Q&A button, and we'll try to answer all of your questions during the webinar. All right, we are ready? Okay. We are ready. Let's start. Keshav, are you ready? Yeah, start please. Okay. We are going to have this the session in English, and Keshav is going to translate. I promise to stop every slide.
Okay? Sure. Okay. Yeah, for sure. Okay, so quick introduction. I know first predictive algorithm. I know first is an AI company. Our main solution is a predictive algorithm that basically generates daily forecast for the financial markets and identifies the most promising investment opportunities on a daily basis. We are combining different AI approaches, cutting edge AI approaches into one AI algorithm. We are utilizing artificial neural networks, deep learning, genetic algorithms, machine learning. The algorithm is generating daily forecast for over 13,500 assets from different asset classes, equities, but also ETFs, commodities, currencies, interest rates, with daily forecasts for multiple time frames, short-term, mid-term, and also long-term. This is a global solution. We are covering over 50 global stock exchanges, including the stock exchanges in the US, Europe, but also India, more than 1,500 Indian stocks. Okay, so शून्य के यूजर्स जो कि हमारे इंडियन क्लाइंट्स हैं, सो मोस्ट ऑफ द यूजर को थोड़ा सा लैंग्वेज की इशू की वजह से हम जो है इसको ट्रांसलेट भी करेंगे पूरे वेबिनार को. सो ट्रांसलेशन में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और साथ में हमारे हैं मिस्टर बैन एंड मिस्टर यारोन. यारोन जो है वो को फाउंडर हैं आइनो फर्स्ट के, एंड बैन जो है हेड ऑफ रिसर्च है फ्रॉम आइनो फर्स्ट टीम. एंड जो आई नो फर्स्ट है बेसिकली क्या एक प्लेटफॉर्म है, एक एआई प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है जो कि इंडियन मार्केट के साथ साथ और भी ग्लोबल मार्केट्स में टोटल 50 एक्सचेंजेस पर अपने प्रोडक्शंस प्रोवाइड करती हैं और 13,500 एसेट्स को ये कवर करते हैं, जिसमें स्टॉक्स, ईटीएफ, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो, इंटरेस्ट रेट और वर्ल्ड एनालिसिस होते हैं. सो प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम है जो कि एआई का अब जमाना है. हर फील्ड में एआई यूज हो रहा है, चाहे हम किसी भी स्ट्रीम में देखें, ड्राइवरलेस कार आ रही है. इसके बाद आजकल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, वहाँ एआई का यूज हो रहा है. हॉस्पिटल्स में एआई यूज हो रहा है. मतलब जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एआई को लेवरेज करके अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं. तो हम क्यों ना स्टॉक मार्केट में एआई का यूज करके, फाइनेंशियल मार्केट में एआई का यूज करके हम जो है एक अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को अच्छा कर पाए. ठीक है, रिसर्च हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत सारी तरह से हम लोग रिसर्च करते हैं, टेक्निकली, फंडामेंटली. इसके बाद हम कई बार न्यूज के ऊपर भी प्ले करते हैं, किसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे या मार्केट स्पेसिफिक न्यूज पे हम लोग प्ले करते हैं. सो ये सारी रिसर्चेस जो हैं हमें साथ में करनी है और हम इसी के साथ यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी है. उससे हमें अच्छे बेनिफिट एआई से की हेल्प से मिल सकते हैं. ओवर टू यू यारोन सर. So if we're starting from quick example of what basically Shoonya users receive today, we can see several live examples from the small cap universe. The algorithm is basically screening the Indian small cap universe and on a daily basis and identifying opportunities. Here you can find several opportunities that the algorithm identified from different time frames. You can find here several stocks, for instance, Visa Steel Limited, that is jumping by 5%, 63 Moons technologies that are moving really nicely. And also, you can find here a stock that was highlighted for the 1 month time frame that already jumping as we speak by more than 10%. This is just an illustration. It's not an investment advice, just in order to assist you to understand how you can utilize on a daily basis the AI algorithm in order to identify opportunities on a daily basis, basically.
सो अगर हम बात करें एआई के प्रेडिक्शंस की कि आज इंडियन मार्केट के लिए एआई ने क्या प्रेडिक्ट किया था, तो बेसिकली क्या है, आईनो फर्स्ट जो है वो मिनिमम 3 डेज से 1 ईयर तक की प्रोडिक्शन देता है, 1 ईयर तक का हमें टाइम फ्रेम दिखाता है कि हम किन स्टॉक्स में अपसाइड या डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। सो 3 डेज के लिए जो सिलेक्ट किए थे स्टॉक्स, उसके अंदर 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने सेम डे में ही हमें 5% से ज़्यादा के मूव दिखा दिए। सो जैसे 63 मून्स, वीसा स्टील और टेम्पो ग्लोबल इंडिया, तो ये स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज हैं। साथ ही कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें 7 डेज के लिए प्रिडिक्ट किए थे, 14 डेज के लिए प्रिडिक्ट किए थे, या 1 महीने के लिए प्रिडिक्ट किए थे, 1 मंथ के लिए। सो वहां पर भी हमें जो है 10% तक के मूव जो हैं वो एक ही दिन में देखने को मिले, मतलब ऑन द सिंगल डे हमें ये अच्छे मूव जो हैं वो देखने को मिले हैं। सो इस तरह से अब क्या होता है कि इंडियन मार्केट में देयर आर मोर देन 1500 कंपनीज जो डेली बेसिस पे ट्रेड होती हैं एनएससी पर। और अगर हम बात करें बीएससी के आंकड़े भी जोड़ लें तो लगभग लगभग 4000 से ज्यादा कंपनियां हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो ठीक है, उसमें से टॉप 1500 कंपनीज जो हैं उनके ऊपर एआई अपनी प्रेडिक्शंस देता है कि उनमें से कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आने वाले टाइम पर हमें एक अपसाइड या डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। सो अभी उन्हीं 1500 स्टॉक्स में से जो सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं, टॉप 10 जो अपसाइड जा सकते हैं और टॉप 10 जो डाउन साइड जा सकते हैं, वो स्टॉक्स जो हैं हम आपको सजेस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आईनो फर्स्ट के ऊपर। सो हमारा क्या है, अगर हम रिसर्च करके इन स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, और 1500 स्टॉक्स के ऊपर नजर रख पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बड़ी से बड़ी टीम भी जो है इस काम को उतना स्मूथली नहीं कर सकती जितना एक एआई कर सकता है। क्या है, जब हम कोई काम मशीन से करवाते हैं ना, वो काम बिल्कुल परफेक्शन में निकल के आता है। मतलब वहां पर बायसनेस नहीं हो सकती, या कुछ ऐसा नहीं लग सकता कि यार चल ठीक है, मतलब अगर किसी का कोई हम परसेंटेज ही देख रहे हैं तो यार चल 2% अगर हमने मान लिया कि 2% पे हमने इसको फिल्टर लगाया है कि 2% का फिल्टर है, तो अगर हम मैनुअली करेंगे उसको तो हम बोलेंगे यार चल 1.95 तो 2 ही होता है ना। बट मशीन नहीं करेगी, मशीन के लिए तो बिल्कुल पॉइंट्स की भी वैल्यू है। ठीक है, तो उसी तरह से है कि ह्यूमन इंटरवेंशन में बायसनेस आ सकती है, बट मशीन्स के साथ ऐसा नहीं होता। मशीन अपना काम पूरी परफेक्शन से करती है, और उसी परफेक्शन से ये आईनो फर्स्ट जो है आपके लिए स्टॉक्स भी प्रेडिक्ट करता है। Over to you, Yaron sir. Okay, thank you very much. It's important to highlight all those predictions are live predictions from today, hot from the oven. It's available in the platform. Those are the same predictions that Dino First subscribers has received today. Just a quick illustration of how the AI algorithm is working. So ये जो भी predictions हम देख रहे हैं ये आज ही की predictions हैं, it's from today only। ये जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं आईनो फर्स्ट के, उन सभी को ये predictions दिखाई दी हैं। सो जो लोग आईनो फर्स्ट सब्सक्राइब करके रखे हैं उन्हें ये predictions मिल रही हैं। सो आप लोग भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि ये किस तरह आपकी हेल्प करेगा। डेली बेसिस पर जो है ये अपडेट होता है, रोज आपको नए स्टॉक्स दिखाई देंगे, और मिनिमम 3 डेज से लेकर 1 ईयर तक की प्रेडिक्शंस आपको आईनो फर्स्ट के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। ओवर टू यू यार। Okay, so let's understand and get more info regarding the team. The I know first predictive algorithm was developed by a unique R&D team that includes PhDs, AI and machine learning experts. The R&D team is being led by Dr. Lipa Roitman, one of the leading experts in the field of artificial intelligence, machine learning, from the Weizmann Institute of Science with over 23 years of experience.
Dr. Reutemann is leading the R&D team, and in the team we have also math professor from Tel Aviv University, as well as employees with the background of computer science, data science, math, statistics, and also physics. Ben, that is here today, is the head of our advisory team. He used to work as an advisor for one of the leading bank in Israel, Bank Hapoalim. I'm the CEO and the co-founder. I'm also lecturing in one of the leading universities here in Israel. And I used to work for one of the leading consulting firm here in Israel. I'm engineer with MBA, and I was starting I Know First with Dr. Reutemann. ओके सो एक आई नो फर्स्ट टीम का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि किन किन लोगों ने इस प्रोडक्ट को बनाया है। सो डॉक्टर लिपा रोहितमैन है जिनकी को फाउंडर एंड चीफ साइंटिस्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे, जिनका ये आइडिया था और जिन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया। सो उनका 23 इयर्स का रिसर्च का और मशीन लर्निंग का एक्सपीरियंस है, और वो सेम फील्ड से उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है। सो एक अच्छे यूनिक आइडिया के साथ और किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टर्स की या ट्रेडर्स की जो कि मार्केट में अपने करियर को बनाना चाहते हैं। सो ऑब्वियस जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लोगों के लिए इतने सारे स्टॉक्स पर नजर रखना ठीक नहीं है, और मतलब पॉसिबल भी नहीं है। सो पीछे पूरी मशीन लर्निंग है जो आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देती है। साथ में हमारे साथ हैं मिस्टर यारोन जो कि को फाउंडर एंड सीईओ है इस पूरे प्रोडक्ट के, जो आई नो फर्स्ट है, और इन्हें भी एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का पूरा नॉलेज है। और मिस्टर बैन जो है वो हेड ऑफ एडवाइजरी हैं आई नो फर्स्ट टीम के, एंड इन्हीं लोगों की टीम जो है ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो संभालती है और हमारे लिए ऐसे इंसाइट्स लेके आती है जो कि यूजफुल हो कि किस तरह से हम अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को अच्छा और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज करके एक अच्छी अपना एक अच्छा करियर इस मार्केट में कंटिन्यू करते हैं। ओवर टू यू यान सर। Okay, the I Know First predictive algorithm is being trusted by the world's leading hedge funds, investment houses, banks, family office, and also investment firms. Among this list, you can find several leading hedge funds, and also you can find here Meitav. With Meitav, we have recently launched the first AI power mutual fund that is available now in Israel. We are really proud about this product and about this cooperation. And right now in the Tel Aviv Stock Exchange, there is a product that is based on the I Know First predictive algorithm, the very same predictive algorithm that you're going to see in this webinar. सो आई नो फर्स्ट जो है वो मतलब अगर क्लाइंट्स की बात करें तो वर्ल्ड के बड़े बड़े हेज फंड्स इनके क्लाइंट्स हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट हाउसेस, बैंक्स, फैमिली ऑफिसेस, ब्रोकरेज फर्म्स, एचएनआईज जो हैं वो आई नो फर्स्ट का यूज करते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, नेशनल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ अमेरिका, टोटल कैपिटल, सी कैपिटल, ये सब जो है ये ऐसे फर्म्स हैं जो कि आई नो फर्स्ट का यूज करती हैं, इनकी टेक्नोलॉजी को लीवरेज करती है अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और मिताओ करके एक इन्वेस्टमेंट हाउस है इजराइल में जो कि एक म्यूचुअल फंड जो कि बेस्ड ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, मतलब एआई बेस्ड म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं इजराइल में। सो टेक्नोलॉजी है, एक्सेप्ट करेंगे धीरे धीरे, पूरे वर्ल्ड में एआई का बोलबाला आने वाला है। हर कोई कहता है कि एआई हर चीज कर सकता है, ठीक है, अभी मैनुअली हम इसको खत्म नहीं कर सकते कि अभी मैनुअल हट के हम बिल्कुल ही एआई पर आ जाए, हमें अपनी रिसर्च भी करनी है, बट हाँ एटलीस्ट हम इसका यूज कर सकते हैं उन स्टॉक्स को
वो फाइंड आउट करने में जहां हमें एक अच्छे अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक की लिस्ट ही हमें दे देता है, उनके ऊपर हम अपनी खुद की रिसर्च कर लेते हैं कि ठीक है ये स्टॉक मुझे भी ठीक लग रहा है और एज पर एआई इसमें हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, तो ऑब्वियसली हम अपनी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, चाहे हमारा नजरिया ट्रेडिंग का हो, इन्वेस्टमेंट का हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर हम बात करें कुछ स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी, तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन का जो स्टॉक्स में हमारा व्यू होता है उस पर भी ये हमारी काफी हेल्प करता है। तो मिनिमम 3 डेज से 1 साल तक के प्रोडिक्शंस जो है वो हमें आई नो फर्स्ट पे देखने को मिल जाते हैं। ओवर टू यू यार। Thank you. Okay. The predictive algorithm, the INOFirst predictive algorithm has received several awards from different entities, including from UBS, entity data from Japan, the Geneva Wealth Tech Forum. We are, if you will move to the next one, yes, we have attended also different events, including in India. Here you can find several awards that we have received. Here you can find Ben in Bombay, right? Yeah, it's a Bombay Stock Exchange. Okay. And this is Ben Rubin, the famous one. We are also delivering a fintech course in the leading university here in Israel. And you might be able to find, if you will go over the website, you will might be able to find also media coverage that the INOFirst predictive algorithm has received. I'm going to share several links in the chat in order that you will be able to watch all the coverage later. सो आई नो फर्स्ट जो है उससे काफी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि टेक है तो ऑब्वियसली आजकल टेक का जमाना है। सो अच्छी इनोवेशन है जिसको हमेशा ही सराहा जाता है। सो इंडिया में भी आई नो फर्स्ट को अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, so award-winning AI algorithm, fintech, बेंजिंगा जैसे फर्म्स ने जो है जैसे इवेंट्स ने आई नो फर्स्ट को अवार्ड्स दिए हैं। नेक्स्ट प्लीज। या सो आई नो फर्स्ट को इंडिया में भी इंडिया फिनटेक फोरम से जो है अवार्ड मिला है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है, वो अपॉर्चुनिटी इंडियन इन्वेस्टर्स को देने के लिए आई नो फर्स्ट जाना जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो इजराइल की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर एजुकेशन देने का काम भी करते हैं मिस्टर बैन, जो कि इंडिया में भी अवार्ड लेने आए थे और अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर ये आई नो फर्स्ट किस तरह से काम करता है और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लीवरेज कर पाते हैं हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, उसे एजुकेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मीडिया कवरेज भी इनकी है जो कि हम इनकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। सो आई नो फर्स्ट की जो भी एल्गोरिदम्स हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है किस तरह से वो एल्गोरिदमिक फोरकास्ट करते हैं और कैसे हम उसे लेवरेज करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। Yeah. Okay, so basically we are providing two solutions to our clients. The first solution that we are providing is the daily forecast. A daily forecast that can assist you on a daily basis to identify the market trend and also to identify opportunities from the NSE, BSE, and from several different market verticals. The small caps, the Indian small cap stocks, the mid cap stocks in India, and also the large cap stocks in India. This is being updated on a daily basis,
And every day, basically, you are receiving the best opportunities for the different time frames, short-term, mid-term, and also long-term. On top of that, we have developed also a systematic trading strategies solution that basically converting the daily prediction into a portfolio. This is the product, and the mutual fund that we have just launched in Israel is based on this systematic trading strategy, basically. यस सो बात करें आइनो फर्स्ट क्या चीज प्रोवाइड कराता है, तो आइनो फर्स्ट डेली फोरकास्ट प्रोवाइड कराता है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों ही तरह के एसेट क्लास में, तीनों तरह के स्टॉक्स के अंदर, और डेली फोरकास्ट होते हैं। साथ में उसकी परफॉर्मेंस होती है कि जो भी स्टॉक आइनो फर्स्ट ने सजेस्ट किया था वो क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। साथ में अगर एआई की बात करके हम बात करते हैं अगर फंड्स की, तो एस&पी का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो वो 61.36% है, और वहीं ऐसे स्टॉक्स जो कि आइनो फर्स्ट ने सजेस्ट किया है उनका जो रिटर्न है वो 368.81% का है। सो फंड मैनेजमेंट के लिए या फिर बात करें हम स्टॉक सिलेक्शन के लिए, आइनो फर्स्ट एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि एआई बेस्ड स्टॉक प्रेडिक्शन करता है। सो हमें ये स्टॉक्स ऑटोमेटेड तरीके से फाइंड आउट करके देता है कि इन स्टॉक्स में आने वाले टाइम पे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इट्स अ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में कई बार जो है हमें जैसे कमेंट्स में देख रहा हूँ कि प्रिडिक्शंस जो हैं वो किस फ्रेम में होती है, तो एफएनओ में होती है नहीं होती है। अभी स्टॉक स्पेसिफिक है ये इंडिया में, सो अभी एफएनओ नहीं है, बट हाँ अगर किसी स्टॉक पर ये आपको मूवमेंट दिखा रहा है तो ऑब्वियसली उसके फ्यूचर में भी उसी तरह का मूवमेंट होगा। सो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने डिसीजंस ले सकते हैं, बट हमने अपनी रिसर्च हमेशा करनी है, नॉट बेस्ड ऑन दिस के अगर एआई ने कह दिया है कि कोई एक्सवाइजी स्टॉक्स जो है वो ऊपर जा सकते हैं तो वो ऊपर चला ही जाएगा। वी नीड टू हमारी मतलब जो भी पूरी रिसर्च है वो कंप्लीट करके उसके बाद ही हम जो है कोई डिसीजन लें। ओवर टू यू यारन सर। Thank you. The INOFirst predictive algorithm includes 3 components. All of those components are available to Shoonya users. The first component is assisting us to identify the most promising investment opportunities from the Indian market. Basically, the algorithm screens the entire Indian market and identify opportunities on a daily basis. The second component is a stock market intelligence component. This component assisting us to utilize artificial intelligence in order to identify leading sectors within the Indian market, leading indices, and also sectors and indices that we should avoid from the Indian market. It's very important component. We are going to showcase this component in this webinar as well. And the last component is another interesting component. It's providing us a customized forecast based on each user portfolio. So let's say you are already holding specific stocks, Tata and other stocks. The INOFirst predictive algorithm is able to provide you the very same forecast for your own portfolio. It's a customized solution that helping you to see and to decide which part of the portfolio we should replace, which part of the portfolio we should keep. And basically by combining those two components, we can optimize our portfolio. सो INOFirst की जो एल्गोरिथम्स हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं, उसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो सबसे प्रॉमिसिंग जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। लीडिंग सेक्टर आइडेंटिफाई करता है, इंडाइसेस आइडेंटिफाई करता है।
हमें आई नो फर्स्ट के जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें देखने को मिल जाएगा कि स्टॉक्स के साथ साथ ये इंडाइसेस पर भी अपना व्यू बताता है कि आने वाले 3 दिन से लेके 1 साल तक उस पर्टिकुलर इंडाइसेस की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। तो हम जैसे मान लीजिए अगर हम एफएमसीजी में हैं तो हम एफएमसीजी का इंडाइसेस भी देख सकते हैं और उससे रिलेटेड जो कंपनीज है उसके ऊपर अगर हमें कोई प्रिडिक्शन दिखा रहा है तो वो डबल कंफर्मेशन हो जाती है, एक पर्टिकुलर स्टॉक की कंफर्मेशन, एक उस इंडाइसेस की कंफर्मेशन कि ये तो पूरा इंडेक्स ही चलने वाला है। ठीक है, अगर आईटी की बात करें तो ये पूरा आईटी सेक्टर चलने वाला है और ये 4 आईटी स्टॉक सजेस्ट कर रहा है, तो वो दो दो बोथ कंफर्मेशन हमें एक साथ मिल जाती है, जॉइंट कंफर्मेशन बोल सकते हैं कि स्टॉक पर भी मिल रही है और हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर की भी मिल रही है जिस सेक्टर में वो स्टॉक आता है। ठीक है, तो और एआई पावर्ड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन जो है ये क्या है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसको भी ऑप्टिमाइज करता है, देखता है, चेक करता है और उसको कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है। मतलब आपको बताएगा कि आप ये स्टॉक्स कम कर सकते हो, इस स्टॉक में होल्डिंग बढ़ा सकते हो ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस्ड रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब उस पे आपको किसी तरह का ऐसा नुकसान देखना ना पड़े। पर ठीक है, इट्स अ टेक्नोलॉजी। हम अपना पोर्टफोलियो जो बनाते हैं वो मैनुअल तरीके से ही बनाते हैं, उन्हीं चुनिंदा गिने चुने स्टॉक्स में होते हैं जिनको हम ट्रैक करते रहते हैं। बट एआई की हेल्प से हम ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो जिनके बारे में हमने कभी सुना ही ना हो, बट लेकिन हाँ हमें रिसर्च करना तो आता है। तो एक बार अगर हमें स्टॉक पता लग जाए कि यार ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसके अंदर हमें मूवमेंट मिल सकती है, तो क्यों ना हम उस स्टॉक के ऊपर रिसर्च करें। मे बी हो सकता है कि हमें बहुत अच्छी कंपनी इसके अंदर मिल जाए। और कई बार ऐसा होता है, कई स्टॉक्स आई नो फर्स्ट पर ऐसे आते हैं जिनके हमने कई जिन कंपनीज को हमने कभी सुना भी नहीं होता कि यार ये भी कोई कंपनी है, हमें उसका बिजनेस नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता, बट हाँ जब हम उसकी बैलेंस शीट पढ़ते हैं या उस कंपनी के बारे में जानते हैं, उसका प्रोडक्ट समझते हैं, देन उस कंपनी की मैनेजमेंट को समझते हैं, तो यस वी गेट टू नो कि हाँ अगर हम इस कंपनी में पर्टिकुलर कंपनी में अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यस हमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ओवर टू यू राम। Thank you. So how we do it? Every day, the predictive algorithm is collecting huge amounts of data that coming from the entire financial market. We are collecting data that related to equities, data that related to commodities, data that related to currencies, and also interest rates. We are adding the daily data to our database. We are managing database with historical data. And around the clock, the algorithm learning and building the complex network that exists in the financial market. There are thousands of correlation sets in the financial market. And I know first predictive algorithm is able to model those correlations, those relationships, and to build this complex network on a daily basis from scratch without any human intervention. Before each trading day, the I know first AI algorithm is generating the forecast for the different time frames, for the short term, as we seen in the example before, for the midterm, and also for the long term. या सो अब एल्गोरिदम काम किस तरह से करती है, पूरे स्टॉक्स जो हमें शो किए जा रहे हैं जो भी 3 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए, वो स्टॉक आया कैसे। सो आई नो फर्स्ट जो है वो पूरा फाइनेंशियल डेटा जो है वो वेंडर से कलेक्ट करता है और 15 ईयर के डेटा बेस को जो है पूरा तरीके से एक साइकिल में डालता है, उस लर्निंग एंड प्रोडक्शन साइकिल्स में जाता है और वहां फिर जो है हमें इसके रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो अगर हम बात करें इस साइकिल की, तो ये जो साइकिल है इसके अंदर होता क्या क्या है, इसको स्टॉक को इसको फंडामेंटली भी चेक किया जाता है, टेक्निकली भी चेक किया जाता है और 15 साल की हिस्ट्री को हर एक सिनेरियो को चेक किया जाता है। अभी ऐसा है कि आपने देखा कि हम अगर बात करते हैं सिर्फ एक नॉर्मल चार्ट की अगर मैं बात कर लूं तो 5 मिनट के चार्ट पर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग होंगे, 15 मिनट पे अलग होंगे, 1 डे पे अलग होंगे। एआई क्या कर रहा है, एआई हर एक चीज को मॉनिटर कर रहा है, वो हर टाइम फ्रेम का हर
इंडिकेटर का, हर चीज का एनालाइज करके हमें बता रहा है कि बॉस ये आपका जो शेयर है ये इस पैरामीटर पे बिल्कुल ठीक है और आप जो है इसके अंदर एंट्री कर सकते हो और अपनी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो भी ग्रोथ देखना चाहो वो आप देख सकते हो। सो अब क्या होता है कि कई बार जैसे हमें स्टॉक दिखा दिया, ठीक है, अब एआई का काम था हमारे लिए स्टॉक सजेस्ट करना, ठीक है। अब हम अगर उसको देखेंगे तो हम हर तरह से देखेंगे कि जो वो दिखा रहा है वहां कहीं हमें कोई पॉसिबल रेजिस्टेंस बिल्कुल साथ में ही तो नहीं है, ठीक है, जिसको मतलब हम हमें जो इसका डर लग रहा हो। मे बी अगर एआई ने एआई हर एक टाइम फ्रेम को एनालाइज करता है, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, हफ्ता, मंथली, हर तरह से वो एनालाइज करके 15 साल के हर एक सिनेरियो को एनालाइज करता है कि आज से 4 साल पहले सेम सिनेरियो था, ऐसा था, तो उसके बाद स्टॉक ने इस तरह से परफॉर्म किया था, तो उसकी प्रिडिक्शंस और उसकी उस जो भी उसने प्रेडिक्ट किया है उस वो कितना पॉसिबल है उसके अपसाइड जाने का या डाउन साइड जाने का, वो सारी प्रिडिक्शंस जो है ये हमें बताता है। और अगर हम बात करें इस पूरे साइकिल में तो हमें 3 दिन से लेके 1 साल तक के स्टॉक्स जो है वो सजेस्ट करता है कि अगर जैसे कोई स्टॉक जो है सेम सिनेरियो के ऊपर 3 ही दिन में रिटर्न दे जाता है, या हो सकता है नहीं जी 3 दिन में रिटर्न नहीं दे पाता, इसको 1 महीना लगेगा यहाँ से अपसाइड जाने में, 1 महीने के अंदर ये अपसाइड चला जाएगा। आज से 3 साल पहले सेम सिनेरियो था, उसके 4 साल पहले भी सेम सिनेरियो था, तो वो जो है उन सब चीजों को एनालाइज करके हमारे लिए स्टॉक जो है वो आइडेंटिफाई करता है। ओवर टू यू यार। Thank you very much. Okay, we are combining different AI technologies into one machine learning algorithm. The leading one is deep learning and artificial neural networks. We are utilizing genetic algorithms as well as reinforcement learning. The most interesting thing about this predictive algorithm is the ability to separate and to focus on the most predictable assets from each market. For instance, the algorithm is able to separate and to focus on the most predictable assets from the Indian market, from the NSE or the BSE, from the large caps, small caps, or mid caps. सो एआई की जो अप्रोच है वो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी होती है और इसी टेक्नोलॉजी से जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली इन फाइनेंशियल मार्केट, अगर वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी देख रहे हैं, या हम मेडिकल लाइन में भी देख रहे हैं, तो ये सब एक लर्निंग से आते हैं। डीप लर्निंग अप्रोच होती है, मॉडल को सिखाया जाता है, मॉडल ऐसे ही किसी चीज का ऑपरेशन नहीं कर देता है, उसको पूरी तरह से बताया जाता है कि ऐसे ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, तभी वो जाकर, और क्या परफेक्शन है, मैनुअली गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एआई। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई किसी को बोलेगा कि आप ड्राइवरलेस कार में बैठ जाओ तो एक बारी के लिए तो डर लगेगा, बट अब जो है अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, यस ड्राइवरलेस कार सड़कों पे चल रही है। बाहर की कंट्रीज में तो उबर जैसे टैक्सीज भी आपको ड्राइवरलेस देखने को मिल रही हैं। इंडियन मार्केट में भी इंडियन कंपनीज ने भी उस चीज को पॉसिबल किया है और वो हमें कई सारी गाड़ियों में जो है ड्राइवरलेस फीचर देखने को मिल जाता है कि हम चाहे 5-10 मिनट के लिए ही अपने गाड़ी के ऊपर पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ये सही चल रही है, 5-10 मिनट तो संभाल लेगी। तो अब फाइनेंशियल मार्केट में भी सेम तरह से जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कदम रख रही है। और रही बात इस चीज की कि पोर्टफोलियो जो है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पोर्टफोलियो जो है वो शून्य के प्लेटफॉर्म पे ही होना चाहिए। यस, शून्य के प्लेटफॉर्म पे ही पोर्टफोलियो होना चाहिए। सो तभी आप आई नो फर्स्ट की वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है उसको आप यूज कर पाएंगे। उसके ऊपर जो भी आपके पोर्टफोलियो है उसमें जो भी स्टॉक्स हैं उसके ऊपर डेली प्रिडिक्शंस और सिग्नल्स आपको जो है वो देखने को मिलते रहेंगे आई नो फर्स्ट की साइड से, किसी भी स्टॉक में कितना अच्छा वो प्रिडिक्ट मतलब
कैसा अपसाइड या डाउनसाइड किसी भी तरह की अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो वो भी आपको दिखा देगा, और अगर वो पॉजिटिव जो भी होंगे वो भी आपको बताता रहेगा। सो सभी तीनों ही स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों ही तरह की कंपनीज पर आइनो फर्स्ट की प्रेडिक्शंस हमें देखने को मिलती है। शून्य के प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है आइनो फर्स्ट। ओवर टू यू Arun sir. Okay, thank you. Okay. So why using artificial intelligence for stock picking? What is the advantages of using AI? So first, AI can analyze huge amounts of data and identify opportunities by using this amount of data. This is a motion-free decision. The AI system are not subject to any emotional bias that can affect human traders. Pattern recognition. The AI can identify patterns in the market, can identify correlations. If a specific stock is moving, there are other stocks that should move as well, and this is exactly the opportunities that the algorithm is able to identify. And also adaptability. AI system can adapt to changing market, and the market are changing on a daily basis. You cannot compare the market that we had 1 month ago to the market that we have right now. And the AI algorithm can adapt himself to the existing situation of the markets. सो एआई का यूज क्यों किया जाए स्टॉक पिकिंग के लिए? वाई एआई? ठीक है, अभी हम खुद भी तो एनालाइज कर सकते हैं। देन वाई वी? जो काम मशीन कर सकती है उस काम को हम क्यों करें? ठीक है, अगर मतलब गाड़ी इंजन से चल सकती है तो बैलगाड़ी ही क्यों बनाई जाए? इंजन से चलने वाली गाड़ी का यूज किया जा सकता है ना? सो एआई क्या करता है कि सभी तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज जो होती हैं उन्हें हैंडल करता है। हर स्ट्रेटजी, जैसे मैंने आपको बताया कि हर तरह के पॉसिबल सिनेरियो को, आप जो भी पॉसिबल सिनेरियो मानते हो कि एमएससीडी का ये लेवल, आरएसआई का वो लेवल, जो भी जिस भी पॉसिबल सिनेरियो को आप लोग जानना चाहते हो, एआई को हर चीज पता है। ठीक है, एआई हर छोटी से छोटी स्ट्रेटेजी से लेके एक बड़ी से बड़ी चाहे वो डाउ थ्योरी हो या एलिट वेव हो, जिस भी तरह की थ्योरी हो, हर थ्योरी को समझता है और उसके ऊपर अपना जो है स्पीड और एफिशिएंसी, मतलब हमारी डाउ थ्योरी गलत हो सकती है जिसको हम देख रहे हैं, या जो भी हम एलिट वेव देख रहे हैं वो हमें गलत लग सकती है, लेकिन एआई को गलत नहीं लग सकती। वो पैटर्न को समझता है, हर तरह के पैटर्न को, आप जितने भी चार्ट पैटर्न देख रहे हैं हर पैटर्न को इजीली एआई पढ़ सकता है। आप पैटर्न बता दो, वो किस किस स्टॉक में सेम पैटर्न बन रहा है वो आपको ढूंढ के बता देगा विद इन अ सेकेंड्स। ठीक है, सो यही तो टेक्नोलॉजी है, इसी को ही तो हमें यूज करना है और इसी का यूज करके हमने अपने डिसीजंस लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर इमोशंस नहीं है, मशीन में कोई इमोशन नहीं होता, मशीन सबके लिए एक जैसा काम करती है। ठीक है, आप तो मशीन में कोई इमोशन नहीं है, उसका किसी चीज से कोई लगाव नहीं है, उसको तो डिसीजन देना है। ठीक है, वो आपको जो 10 स्टॉक दिखाएगी मुझे भी वही 10 स्टॉक्स दिखाएगी। सो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पूरा मार्केट की जो भी मॉनिटरिंग है वो हम तो 24/7 नहीं कर सकते, लेकिन एआई कर सकता है। इसलिए एआई, नॉट वी। ठीक है, इसलिए एआई की जरूरत पड़ रही है वर्ल्ड के अंदर, हर फील्ड में डेवलपमेंट के लिए एआई एआई एआई, हर जगह में एआई देखने को मिलेगा। सो फाइनेंशियल मार्केट में भी हमें अभी भी एआई देखने को मिल रहा है और डे बाय डे ये और एडवांस होता जाएगा। अभी ये स्टॉक्स पर है, आगे चल के कमोडिटीज में, एफएनओ में, हर तरह की प्रेडिक्शंस जो है हमें इन द नियर टाइम हमें सब कुछ देखने को मिलेगा इसी आइनो फर्स्ट पे, इसी शून्य प्लेटफॉर्म पर। ओवर टू यू Arun sir. Okay, so if you're comparing artificial intelligence with technical analysis, we can see that artificial intelligence is basically much better.
When we're using first algorithm, we have the ability for self-learning, adaptability. We are learning new patterns. We are exposuring to many different stocks indices. We are actually monitoring the entire market and not a specific stock. We are providing signals not only for one time frame, but also for the short term, mid term, and also long term. There is a confidence level for each forecast, and we are not subject to human errors and bias. यस, सो टेक्निकल एनालिसिस में और आइनो फर्स्ट के एल्गोरिदम को अगर हम कंपेयर करें, सो सेल्फ लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस में कितने ही स्टॉक्स पर हम कर सकते हैं, हर एक स्टॉक की तो कर नहीं सकते, और कितने टाइम का डेटा जो है हम उसको मॉनिटर कर पाएंगे। मैं अगर एक चार्ट की बात करूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा किसी भी चार्ट को 1 महीने का देख लूंगा, 2 महीने का देख लूंगा, लेकिन एआई जो है वो 15 साल का डेटा लेके आएगा, 15 ईयर्स की हर एक सिनेरियो को स्टडी करेगा। ठीक है, आप हम लोग क्या करते हैं, हम किसी सिनेरियो को, यार हमें लगता है कि बॉस ये वाला लेवल अब जो है ये रेजिस्टेंस टूटा है, तो अब जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा। ठीक है, अब हमें जैसे ही मार्केट में हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारा व्यू लिया हमने 2 से 3 दिन का, तो हमने देखा कि यार वीकली बेसिस पे वहां पर बीच में रेजिस्टेंस थी जो कि हम डेली बेसिस पे देखना भूल गए थे। ठीक है, जब हम डेली चार्ट देख रहे थे तो हमें वो रेजिस्टेंस दिखाई नहीं थी जो वीकली की थी। ठीक है, या फिर हमें वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाई थी जो कि 1 आवर पे थी। तो वो चीजों की बायसनेस जो है, जो एरर्स है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं एज अ एआई। ठीक है, नए नए पैटर्न्स हम लोग नहीं सीख सकते, लेकिन एआई सीख सकता है। ठीक है, डिफरेंट स्टॉक्स, इंडाइसेस, मल्टीपल इंडाइसेस, हम हर इंडाइसेस को भी रोज ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, जितने इंडेक्स हैं हर इंडेक्स को हम रोज नहीं ट्रैक कर सकते, पर एआई कर सकता है। वो हर जगह अपनी नजर रख सकता है, हर डिफरेंट डिफरेंट टाइम होराइजन पे वो अपने सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है। आपको आइनो फर्स्ट के प्लेटफॉर्म पे कोई पर्टिकुलर शेयर ऐसा देखने को मिलेगा जो कि 3 दिन में भी है, 7 दिन में भी है, 14 डेज में भी है, 1 मंथ में भी है, 1 ईयर में भी है, हर एक टाइम फ्रेम में आपको वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो चीज आपको एआई की हेल्प से ही हो सकती है, मैनुअल इंटरवेंशन से नहीं आएगी। ठीक है, प्रिडिक्टिबिलिटी इंडिकेटर है कि जो हमने प्रिडिक्ट किया है, तो अगर कभी पास्ट में हमने ये प्रिडिक्शन दी थी तो उसके कितने चांसेस हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने के। अगर हमने कहा कि फॉर एग्जांपल जैसे 14 का आरएसआई हम चेक कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि 60 से ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हमें एक अच्छी और अपसाइड देखने को मिलेगा, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? इट्स इट 50%, 60%, 70% और 100%, वो हमें एआई की हेल्प में देखने को मिल सकता है। और एआई के मल्टीपल तरह से मल्टीपल इंडिकेटर्स की हेल्प से जो है इसको प्रोवाइड कराता है, और जब हम मैनुअली कर रहे हो तो हम वही 2-4 इंडिकेटर जो कि मार्केट में कॉमन इंडिकेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। ओवर टू यू यार सर। Okay, now I would like to pass the microphone to Ben Rubin. Yes, thank you, Yaron. As we talk about the technical analysis, we can see an example from the markets, from the Nifty 50 here, when the chart have two support lines, one in 25,000 and one in 25,100, and you can see both of those lines were broken by the Nifty 50, and the support lines were broken down by the chart, as we can see here. And if you were using the AI forecast, you could have seen from the 6th of September, which was a few days ago, 3 days ago, that the Nifty VIX, which is the volatility index of the Nifty, was in the top of the table, and the Nifty 50, the index itself, was colored red and was in the bottom of the forecast, and you didn't need any technical analysis or maybe mistaking by some support lines, as we can see here in this part of the chart. Yeah,
सो फिर वही चीज है कि एआई जो है वो टेक्निकल एनालिसिस से बेटर कैसे है, क्यों है, ठीक है। सो जैसा सेम मैंने बताया कि हम अगर बात कर रहे हैं निफ्टी की, सो निफ्टी में जो है हमें हमने चाहे कितने भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखे हों, पीछे जो भी कुछ हुआ इंडियन मार्केट्स में, काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए, कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई जिसकी वजह से हमें लगा कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है, बट आई नो फर्स्ट की प्रेडिक्शन जो थी वो हमेशा ही अप ट्रेंड की थी। हर वीक आई नो फर्स्ट से वीकली बेसिस पर अपसाइड के ट्रेंड्स आते थे कि मार्केट जो है वो अपसाइड पर ही जाएगा। सो बिलीव नहीं होता था, बट यस मार्केट में हमें नए हाईज देखने को मिले, जिसे हम ऑल टाइम हाई बोलते थे उसे ब्रेक करके हमें नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा था। सो ऐसा अगेन एंड अगेन हुआ, सिर्फ एक दो बार नहीं, हमें बार बार ये चीज देखने को मिली कि मार्केट में एक अच्छी रैली आई, एक अच्छी हमें तेजी दिखाई दी एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें सेंटिमेंट्स की, तो ये सेंटिमेंट्स तो खराब थे, पर लेकिन एज पर एआई मार्केट अपसाइड दिखाने वाला था, और जो कि मार्केट ने दिखाया। तो विक्स की भी बात करें, विक्स भी इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि विक्स में जो है वो अपसाइड मतलब तेजी आ सकती है। सो वो सारी चीजें जो है हमें एआई की हेल्प से देखने को मिलती है। सभी इंडाइसेस, हमारा विक्स कैसा परफॉर्म करने वाला है, आगे वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी, इंडाइसेस कैसे परफॉर्म करेंगे, सेक्टोरियल इंडाइसेस में क्या रहेगा, वो सारी चीजें जो है एआई प्रेडिक्ट करके देता है। Okay, so after logging into the I know first section in the Shoonya app or desktop, you'll get to this screen. In this screen, you can actually control everything and see all the forecasts for different time frames. And we go through it. You can switch between the stock size if you're interested in the large cap, mid cap, or small cap stocks. You can switch it by clicking on those three options. Of course, you can see all 6 time frames for the forecast. You can get the 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 3 months, and 1 year. You can switch between the time frames just by clicking on one of each of those buttons. And you can see past performance of past forecast by clicking here in the bottom of the numbers. You can see days of the forecast from days before. And of course, you have also the trading book. You can see the stocks that you want, and you can actually trade it. You can buy it or sell it by the I know first section in the Shoonya platform, and also see the book and the stats of each and every stock that you click in. In the next slide, I will explain about the signal and predictability. सो आई नो फर्स्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ स्टॉक्स आपको ग्रीन कलर में मार्क है, कुछ स्टॉक्स जो है वो रेड कलर में मार्क है। सो ग्रीन कलर जो है वो डिपेक्ट कर रहा है कि जो स्टॉक्स ग्रीन कलर में है वो अप ट्रेंड दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में। रेड कलर स्टॉक्स जो हैं वो डाउन ट्रेंड दिखा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको ये प्रेडिक्शंस अवेलेबल होती है, 3 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलता है। एक क्लिक करके आप उस टाइम फ्रेम का जो भी स्टॉक्स हैं वो देख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको हर एक टाइम फ्रेम में अवेलेबल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, एआई जो है वो हर एक चीज पर नजर रखता है कि ये स्टॉक 3 दिन के लिए भी बेटर है, 7 दिन के लिए भी बेटर है, 14 दिन के लिए भी बेटर है, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, आपको हर एक टाइम फ्रेम में बेटर है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू दोज स्टॉक्स जो कि किसी एक सिंगल टाइम फ्रेम में अवेलेबल है। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैंने खुद ने ये चीज ऑब्जर्व की है, जो स्टॉक आ रहा है उस पर जो है अलग तरह का हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
सो डायरेक्टली आप पाइनोफर्स्ट के प्लेटफॉर्म से ही बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर डाल सकते हैं, बीटा पर अवेलेबल है और साथ ही साथ मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। सो आप मोबाइल ऐप से भी आइनोफर्स्ट यूज कर सकते हैं, और अगर आप वेब वर्जन यूज करते हैं देन फिर आप beta.shoonya.com का यूज करके आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल ऑन मोबाइल एंड वेब बोथ, ठीक है। तो ऐप पर तो नॉर्मल ऐप में ही अवेलेबल है, आप हब में जाकर वहां से आइनोफर्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर दोस्त जिनको ये चीज नहीं पता है कि आइनोफर्स्ट हमारा जो है वो ऐप पर भी अवेलेबल है, ठीक है। सो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि ये जो सिग्नल और प्रेडिक्टिबिलिटी हमें जो दिखाई दे रही है इसका क्या मीनिंग है। बैक ओवर टू यू। Thank you. Okay, so as we saw, the forecast is is combined with the green cells and red cells. The green cells represent long position, while the red cells represent short position. And each and every cell, we have two indicators that helping us to focus on the best stock. The signal, which is we can see it in the top side, in the top number out of the two in each and every square. The signal is actually the predictive movement of the asset. It's actually the potential movement that the specific asset has, and it's help us to rank the entire investment universe from the best stock with the strongest signal for long up until the bottom with the strongest signal for short. The second indicator is the predictability indicator. Let's locate it on the bottom of each and every square. It moves from 0 to 1. It's Pearson correlation measurements, and it's actually help us to know how good the algorithm can read or forecast the specific asset that we see in the forecast. So in both cases, we are looking for higher numbers with the signal and the predictability, and we can find to each and every stock in the forecast has those two indicators to help us to focus on the best stocks. जैसा मैंने आपको बताया कि आपको दो तरह के कलर्स देखने को मिलेंगे, एक ग्रीन और एक रेड। अच्छा, दो और भी कलर्स हैं, एक लाइट ग्रीन और एक लाइट रेड। तो लाइट ग्रीन का क्या मीनिंग है कि उसमें कम चांसेस है अपसाइड के, बट डार्क ग्रीन में जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो लाइट ग्रीन और लाइट रेड जो आपको कई बार देखने को कम ही मिलेगा, डार्क रेड और डार्क ग्रीन ही हमें ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें सिग्नल और प्रोडक्टिबिलिटी की, तो सिग्नल जो है एक नंबर है जो कि n नंबर तक जा सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो जो टॉप सिग्नल होगा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, आपको वो टॉप सिग्नल सबसे ऊपर दिखाई देगा। जितने भी टॉप सिग्नल्स के स्टॉक्स होंगे वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपको शेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है प्रेडिक्टिबिलिटी की कि प्रेडिक्टिबिलिटी क्या है। सो सिग्नल मान लीजिए फॉर एग्जांपल 200 है, ठीक है, और प्रेडिक्टिबिलिटी है 0.9 की। तो इट मींस कि जब जब 200 के सिग्नल पर ये स्टॉक आया है उसने 90% अपसाइड का रिटर्न दिया है। 9.9 है इज 90%, 0.99 है इट्स 99%, 0 से 1 तक की प्रेडिक्टिबिलिटी का लेवल है। तो अभी जैसे 209 का आपको दिख रहा है और प्रेडिक्टिबिलिटी दिख रही है 0.49%। तो जब जब अपसाइड के सिग्नल आते हैं तब तब 0.49% चांसेस हैं कि ये स्टॉक जो है अपसाइड जाएगा। तो किसी स्टॉक में आपको 1 की प्रेडिक्टिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो 1 की प्रेडिक्टिबिलिटी का मतलब है कि अगर ये सिग्नल आया है तो 100% शेयर अपसाइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बट हर बारी 1 की प्रेडिक्टिबिलिटी के स्टॉक्स देखने को नहीं मिलते। सो सिग्नल इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड प्रेडिक्टिबिलिटी उसका कॉम्बिनेशन है कि जब ये सिग्नल्स इस कॉम्बिनेशन के सिग्नल बनते हैं तो प्रेडिक्टिबिलिटी उस पर अपना वो दिखाती है कि ये व्यू जो है ये कितना स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर शेयर के लिए। ऐसे ही हमें डाउन साइड में भी देखने को मिलता है, जो कि अगर हम किसी दूसरी तरह से बोले तो जो स्टॉक में हम बने हुए अगर किसी में रेड सिग्नल आ रहा है तो वी वुड सजेस्ट कि आप उसमें से एग्जिट कर लें, क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या है शॉर्ट पोजीशंस लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है इक्विटी सेगमेंट में।
सिर्फ FNO में ही आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। सो मतलब बेहतर ये होगा कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक से ही एग्जिट कर लें अगर हमें रेड सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। ओवर टू यू देन। Right. So before we're going to see some examples from the last few weeks and days, we're going to just overview some more features that we have in the I know first section in the Shoonya platform. We can also, besides stocks, see the forecast of indices. We can find a lot of the Indian indices from both of the stock exchange. By clicking on a button, you can switch between the two. And of course, all the time frames for these indices are available as well. And we can also see our holdings. So we can see our portfolio is actually analyzed by the AI. And we can see here of each and every stock that we buy, if the signal is positive or negative, and we can see the predictability of each stocks. So each stock, so it's actually after buying any stock, the algorithm is analyzing our portfolio and giving us his opinion about what should we do with these stocks. And of course, you can see it in the I know first section, and it's included in the service. Yes, and every prediction is being updated on a daily basis, every day before the market opening. So whenever you're opening your computer in the morning, your laptop, or you're using your mobiles, you are receiving an updated prediction with the best opportunities for the upcoming days, and also an updated prediction to your own portfolio, as Ben just described. या सो जैसे मैंने आपको बताया कि आई नो फर्स्ट स्टॉक्स के साथ साथ इंडाइसेस पर भी अपनी प्रेडिक्शन देता है, सिग्नल्स दिखाता है। सो इस तरह से कुछ इंडाइसेस वाला पेज दिखाई देता है। जो लोग सब्सक्राइब्ड हैं वो तो चेक करते ही हैं, जो जिन्होंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया है या करना चाह रहे हैं तो उनके लिए इस तरह का एक ओवरव्यू दिखाई देता है जिसमें सभी इंडाइसेस होते हैं, सेक्टोरियल इंडाइसेस। सो जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी पर्टिकुलर शेयर, फॉर एग्जांपल आपको किसी आईटी कंपनी का शेयर दिखाई दे रहा है, तो आप, या फिर हो सकता है आपको 10 में से 4 शेयर किसी आईटी कंपनी के दिख रहे हो, आप इसमें चेक कर सकते हो कि आईटी कंपनी का तो पूरा सेक्टर ही पॉजिटिव दिखा रहा है, तो आपको एक डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि शेयर तो दिखाया दिखाया, सेक्टर भी दिखा दिया कि ये सेक्टर में तेजी आ सकती है। ठीक है, ऐसे ही एफएमसीजी में दिखा सकता है, बैंक में दिखा सकता है, आईटी में दिखा सकता है, फार्मा में दिखा सकता है। हर एक सेक्टर में जो है आपको इसकी प्रेडिक्टिबिलिटी देखने को मिल जाती है। अब ये प्रेडिक्टिबिलिटी हर एक टाइम फ्रेम में अवेलेबल है। जिस तरह स्टॉक्स में आप 3 दिन से लेके 1 साल तक का देख पाते हैं, 3 डेज, 14 डेज, उसके बाद 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, वो ही सेम टाइम फ्रेम्स जो हैं इंडाइसेस में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लीज मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो साथ में प्रेडिक्शंस हमारी होल्डिंग्स पर भी दिखाता है। जो भी हमने हमारे स्टॉक होल्ड करके रखे हैं वो सभी उनसे रिलेटेड सिग्नल्स एंड प्रोडक्टिबिलिटी हमें आई नो फर्स्ट के होल्डिंग पेज पर देखने को मिल जाती है। और ये जो है उसके ऊपर अपनी प्रेडिक्शंस और होल्डिंग्स हमें दिखा रहा होता है। सो वहां से हम अपने पोर्टफोलियो को भी एनालाइज करवा सकते हैं। उसका जो है हमें कोई अलग से ये नहीं है कि अगर हमने अपना पोर्टफोलियो भी चेक करवाना है उससे तो उसके लिए कोई अलग से किसी तरह का सब्सक्रिप्शन है। ये सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में, सेम सब्सक्रिप्शन में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so as we know, the Shoonya dashboard is available on the desktop and in the app. You can, in both of the ways, check the forecast for the Indian market.
सो आई नो फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप वेब से भी यूज कर सकते हैं beta.shoonya.com का यूज करके, और आप अपने मोबाइल ऐप पर भी आई नो फर्स्ट यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपको हब में जाकर जो है हमारा आई नो फर्स्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, और उससे हम जो है एक्सेस कर पाएंगे आई नो फर्स्ट को। Okay, and let's see some examples from actually from today. We can see we took some screenshots from the Shoonya dashboard. You can see the date here, it's the 9th of September, and we checked some of the stocks that was leading the forecast. If it's the 3 days large cap stocks that we can see that is actually went up by 3.8%, or with AAU Bank, that is actually going up by 1.6%. Also, stocks from the mid cap size in the 3 days and 7 days that are actually going up as we speak in today's trading day. And this is a live forecast from today from the Shoonya clients that are exposed to the algorithm forecast. Did receive those forecasts that we see here for the large cap and the mid cap, and we're going to see as well other time frames from the small cap 3 days. If you're interested in the small cap, we also provide it for all the time frames. You can see the small cap from the 3 days, for the 7 days, for the 14 days, and even for the 1 month. As we can see that the stock that's called the Panacaballo jumped by 10% just today. And this specific forecast is for 1 month ahead. And also we can see stocks that moved, as we saw at the beginning, in a really high returns. We also provide larger time frames or further or longer time frames as 3 months and 1 year. Here we can see here, for example, the 3 month prediction for this specific stock, SMS Live, or even a forecast for 1 year for advanced forward. We can see the stock Webilo Solar as well going up by almost 5%, but this is a 1 year prediction ahead. So we provide for all the stock size and all the time frames, you get it all at the service. Also the holdings, the indices, all the time frames, daily update, the prediction for all the Indian stocks, all included in the service. सो अगर हम बात करें कुछ ऐसे एग्जांपल्स की जो कि आज ही के लिए प्रेडिक्ट किए थे, और ये तो मैंने भी अभी जैसे बैन बता रहे थे उस टाइम ऑब्जर्व किया। एक मिड गैप में 7 डेज में हमें स्टॉक दिखा रहा है ग्लोबल स्पिरिट। सो अगर आज की हम बात करें तो आज लिकर कंपनी के शेयर में पहले से ही मॉर्निंग से ही हमें तेजी देखने को मिल रही थी। सो एआई जो है हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है। हम अभी चाहे उसको ये समझते हो कि नहीं यार हम मार्केट में 20 साल से बैठे हैं, या कोई कह रहा हो हम 50 साल से बैठे हैं, बट ये जो प्रोडक्ट है ये भी 15 साल की सारी स्टडी एक जगह पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। और हमें चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर ये 15 साल का एनालाइज कर रहा है तो ये 5 साल ज्यादा का ही कर रहे हैं, और हम एनालाइज 10 साल का नहीं कर पा रहे हैं। हम तो एक ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने का एनालाइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा का क्या। वही जैसे मैंने बताया पुराने लेवल्स पहले आपको कभी भी मार्केट में कभी भी आपको ये नहीं होगा कि यार मैं गलत नहीं था, मार्केट गलत था। आपका कोई ट्रेड अगर गलत चला गया, आपने कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड उठाया और वो वहां आपको लॉस हो गया, तो आपको कोई ना कोई रीजन जरूर मिल जाएगा जो आप बोलोगे शाम को कि नहीं यार ये मैंने ही ध्यान नहीं दिया था। हर ट्रेडर हर इन्वेस्टर की यही कहानी है। मुझे भी 10 साल हो गए मार्केट में, मुझसे भी गलती हुई है, कई बार होती है। तो हम भी कभी ये नहीं कहते बाजार गलत था, हम हमेशा ये कहते हैं यार हमारी गलती थी जो हमने ये वाली चीज को ऑब्जर्व करना हम भूल गए। तो वो वाली बायसनेस जो है वो एआई से होना मुश्किल है। एआई से ऐसा नहीं है कि आप एआई को बोलोगे यार ये तू कैसे भूल गया, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं भूल गया। उसे हमेशा पता होगा कि यार मैंने हर एक फैक्टर को एनालाइज करना है। अब
बाजार में हमें आज ही की अगर बात करें तो गुजरात फ्लोरोकेम एयू स्मॉल बैंक्स में इसने 3 डेज के लिए प्रेडिक्ट किया था कि 3 दिन में हमें तेजी देखने को मिलेगी। वो सेम डे ही जिस दिन प्रेडिक्ट किया उसी दिन एक शेयर 4% के आसपास तेजी दिखा रहा है, एक शेयर 1.5% से ज्यादा तेजी दिखा रहा है। फिर जो हमारा एमनिस्ट केमिकल का जो स्टॉक है वहां पर हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही है। सो डिफरेंट डिफरेंट कैप के स्टॉक से, लार्ज कैप से, स्मॉल कैप से, हर जिस जिस भी कैटेगरी का स्टॉक है वहां पर हमें सेम डे भी रिजल्ट्स आते हुए दिख जाते हैं। यस, ये इंट्रा डे के लिए तो नहीं है, मिनिमम 3 दिन की प्रिडिक्शन होती है और 1 साल तक के लिए प्रिडिक्ट करता है। बट यस, जैसे मैंने बताया आपको कि आप ऐसे शेयर्स देखो जो कि हर एक टाइम फ्रेम में अवेलेबल है, वहां पर हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं एआई के वहां पर आते हैं। ओवर टू यू Ben. All right. So before we get with some more examples, we want to present you the special webinar sales that we have for all the participants in this webinar. So you get all the daily AI daily forecast in the with 6 time frames for small cap, mid cap, large cap. You get the indices forecast that we saw, and you get the customized AI power forecast after buying the stock. The AI is analyzing your portfolio and telling you if you should keep this stock or sell it. And all that is for 799 Indian rupee per month. For today only, this introduction price that we are launching for this service for today. And again, you get all the daily forecast. You get 6 time frames for each stock. You got the small cap, mid cap, large cap, indices forecast, customized AI portfolio, and all that for 799 per month. And I can tell you that if you're checking the prices in other states, for example, in the US, this specific package just for 10 stocks costs $179. So this is a very special price that we are giving for the Indian clients. सो एक्सक्लूसिवली शून्य यूजर्स के लिए जो आइनो फर्स्ट की प्राइसिंग है वो है 799 पर मंथ और पूरा होलसम पैकेज है। ठीक है, सभी सर्विसेज उसमें आपको मिलेंगी, डेली फोरकास्ट 6 टाइम फ्रेम में, सभी तरह के इंडाइसेस आपको देखने को मिलेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप जो है अपना एआई पावर्ड जो अपना फोरकास्ट है वो अपनी होल्डिंग्स पर भी देख पाएंगे। सो अगर बात करें यूएस मार्केट के सिर्फ 10 स्टॉक के लिए जो है $179 पर मंथ पे करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की तो सिर्फ 799 जो है रुपीस पर मंथ है। तो बहुत चीपेस्ट प्राइस पर ये अवेलेबल है। अगर आप डायरेक्टली आइनो फर्स्ट की वेबसाइट से जाके बाय करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको इसकी प्राइस $200 $250 देखने को मिलेगी, लेकिन शून्य यूजर्स के लिए ये 799 पर मंथ पर एक्सक्लूसिवली शून्य यूजर्स के लिए अवेलेबल है। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, यूज करके देख सकते हैं। फ्री ट्रायल इसका किसी तरह का अवेलेबल नहीं है, आपको इसको पेड ही लेना पड़ेगा। सो आप 799 इज नॉट अ बिग अमाउंट। एक टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए ऑब्वियसली हम जिस फोन से या जिस सिस्टम से, जिस इंटरनेट से हम इस वेबिनार को देख रहे हैं, हमें हर चीज के लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता है। सो इट्स रियली अ गुड प्रोडक्ट। हम इसको और ज़्यादा ये बेहतर होता जा रहा है। आने वाले टाइम में हम इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स देखेंगे, लाइक कमोडिटी पे प्रिडिक्ट करेगा, फ्यूचर ऑप्शंस, हर चीज़ पर। बट उसके लिए इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है किस तरह से ये जो है प्रेडिक्ट कर रहा है, किस तरह से ये अपने सिग्नल्स बता रहा है। सो वो यूज़ करके ही चीज़ें जो है वो समझ आएंगी। और हमें अपने एनालिसिस ज़रूर करने हैं साथ-साथ में, सिर्फ एआई पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। ओवर टू यू मैन।
Yeah, so if you were using our service, our algorithm forecast in the last 2 weeks or during August, you would have seen in the large cap sector those stocks, Tata El for example, that made in 3 days a 28%, 28 return, which is quite incredible. We can see that this specific stock has the highest signal and one of the best predictability and the best predictability actually in the 3 days time frame. And we can see that the performance of that stock of Tata ELXSI had made 28% in 3 days. And we can see actually the performance of the other 7 stocks that was advised by the algorithm for a long position, and we can see the returns compared to the benchmark in the bottom, and we see that all of the stocks actually outperformed the benchmark, and the average of those 7 stocks was 4.26%. अगर हम बात करें एआई ने जो प्रेडिक्ट किया था उसके रिजल्ट्स क्या रहे, तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि कुछ स्टॉक्स जो हैं एआई ने आपके लिए प्रेडिक्ट किए थे। उसमें टाटा एलेक्सी ने 28% के रिटर्न दिए सिर्फ 3 दिन में, ठीक है। बजाज फिनसर्व के जो रिजल्ट थे वो 5% से ज्यादा थे। वोल्टास में हमें 3% से ज्यादा की तेजी, हिंदाल्को में हमें 2% से ज्यादा की तेजी। ऐसी तरह से जेके सीमेंट, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, वेदांता, ये वो शेयर्स हैं जिसमें हमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला। और उस दौरान बीएसई ने कितना परफॉर्म किया था, बीएसई का जो सेंसेक्स है वो 0.81% बढ़ा था, और अगर एवरेज निकालें तो एवरेज इसमें 4.26% की जो थी एवरेज से हमें इसमें हमारे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, जो कि एआई ने हमारे लिए प्रेडिक्ट किया है। Over to you, Ben. Yeah, in the same way, we have this forecast for 7 days. We can see the stock Grojin actually went up by 19% in 7 days, and we can see the performance of the other 7 stock that were in a long position from the 28th of August, that was not long ago, up until the September 4th, and we can see the performance of those stocks compared to the benchmark. अगर 7 डेज पे बात करें तो 28 अगस्त को जो स्टॉक्स दिए थे उनका 7 दिन में जो परफॉर्मेंस देखने को मिली, उसमें गोदरेज इंडस्ट्री का जो शेयर था वो 19.18% की तेजी दिखा रहा था। बजाज फिनसर्व के शेयर में हमें 8.89% की तेजी, सुंदरम फाइनेंस में तेजी, लॉरस लैब में तेजी, एलएनटी टेक्नोलॉजी में तेजी, वोल्टास में तेजी, एपीएल अपोलो में तेजी। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ शेयर्स जो होंगे आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखने को मिलेंगे। जो शेयर मल्टीपल टाइम फ्रेम में अवेलेबल है उसमें हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। और उन 7 दिनों में अगर बात करें कि सेंसेक्स ने कितना परफॉर्म किया था, तो 0.78% की तेजी थी वहां पर, और इन सभी शेयर्स की अगर एवरेज निकालें तो अप्रोक्स 2.67% की जो है हमें एवरेज यहाँ पर रिटर्न की देखने को मिली थी, जिसमें गोदरेज इंडस्ट्री ने लगभग 20% के रिटर्न जो है वो दिए थे। And Over to again, you. yeah, thank you. And the algorithm is giving us in identifying the best stocks to invest in for different time frames. Here we have the 14 days. We can see from the small cap universe, this is what the algorithm provide us. And we can see the returns are quite amazing. It's with 40%, a really strong signal and a good predictability for the stock AURP. And we can see the performance to the right. In the same way, we have a longer time frame of 1 month that we can find here. Again, with the performance of the stocks, this was actually while the benchmark went down. As we can see, the index was negative in this time frame of 1 month. Those stocks actually presented a positive and pretty significant return in the period of 1 month from the 12th of July up until the 12th in August.
And in the same way, we have the 3-month period. And again, the algorithm provides us the best stocks. And here we can see that the signals and the predictability, especially the predictability, is in higher rates. And we are looking for high predictability level. It's really important. And to the right, we can find almost 120% in 3 months, which is really, really amazing return for this specific stock that you can find in the Shoonya dashboard in the I know first section. यस सो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स पे हमें जो है रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगी और आप इन परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं अपने आइनो फर्स्ट पोर्टल पर और जो भी प्रेडिक्शंस होंगी उन्हें उनकी परफॉर्मेंस भी आइनो फर्स्ट के पोर्टल पर ही आपको चेक करने को मिल जाएंगे जो टॉप परफॉर्मिंग होंगे वो आपको शो होंगे कि ये टॉप परफॉर्मिंग शेयर्स जो इस वीक जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया 14 दिन में या 1 महीने में हर एक टाइम फ्रेम पे आपको अवेलेबल होगा सो शून्य प्लेटफॉर्म पे आइनो फर्स्ट जो है आपको वेब पर भी अवेलेबल है और मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है वेब पे यूज करने के लिए beta.shoonya.com पे जाके आप यूज कर सकते हैं ये चार्जेबल प्लेटफॉर्म है इसको आपको आइनो फर्स्ट को यूज करने के लिए 799 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है किसी भी तरह का फ्री ट्रायल अब अवेलेबल नहीं है सो आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी से भी अच्छा ये आपको एक स्टॉक आइडेंटिफाई करके देने की काबिलियत रखता है प्लेटफॉर्म और प्राइसिंग जो है इसकी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसिंग है इंडियन मार्केट के हिसाब से वो एक अच्छी प्राइसिंग पर शून्य आपके लिए लेकर आया है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें हम खुद अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करके अपने आप को बेहतर बना रहे हैं और आप लोगों की भी जर्नी को इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करें अगर हम बात करें कभी किसी ज़माने में एल्गो ट्रेडिंग हमें बहुत वो लगती थी कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे सिस्टम्स हमारे ऑर्डर मैनेज कर लेगा बट हमने उसको भी एक्सेप्ट किया और आज आप देख सकते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग के क्या रिजल्ट्स हैं। सो उसी तरह से अभी चाहे हम इसको नेग्लेक्ट करें कि नहीं पता नहीं एआई कैसे क्या काम करता होगा बट यस हमें इसे चांस देना चाहिए हमें समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है हम हर चीज़ में आगे टेक्नोलॉजी देख रहे हैं किसी ज़माने में मतलब जिसको हम कहते थे चप्पल छाप फोन आते होते थे पूरे पूरे मतलब एक स्लीपर के जितना बड़ा फोन होता था कॉर्डलेस हम हाथ में लेके चलते होते थे आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन है टेक्नोलॉजी से हम वीडियो कॉल्स एंड इन सब चीजों पर पहुंच पाए तो इन फ्यूचर फाइनेंशियल मार्केट्स भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे और टेक्नोलॉजी का जमाना हर जगह रहेगा सो इस फाइनेंशियल मार्केट में भी आप इसका टेक्नोलॉजी का यूज शून्य प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो आई नो फर्स्ट टैब पे जाके एआई पिक्स में और वहां पर जो है आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स देखने को मिलेंगे ओवर डू यू बैक All right, and even some live or I wanna overview some stocks from the last month and the timing that the algorithm actually presented the forecast. We have again the Tata El Kasi with 14% in a 2 weeks time frame, as we can see here. And it's located on the top of the forecast with the strongest signal and the strongest predictability. This is good two indicators that helping me to choose this stock for buy. If I have the strongest signal and best predictability, those two indicators are giving me the best opportunity from this specific forecast. And we can see if I would buy the stocks in the 19th of August and waited those 2 weeks, I could have made 14% in just 2 weeks from Tata ELXI.
So that's the one of the example from the large cap universe. सो एक टेस्टिंग एग्जांपल है हमारे सामने। 19th ऑफ अगस्त को आप देख सकते हो कहाँ पर स्टॉक था और एआई ने कहाँ पर प्रेडिक्शन दी कि आप इस स्टॉक को बाय करो। उसके बाद आप शेयर में रैली देख सकते हो कि 14% का अपसाइड उस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिला। सो इसी तरह के फोरकास्ट जो है मतलब क्वेश्चंस है कि वो कैसे कब प्रेडिक्ट करता है। वो पहले ही प्रेडिक्ट करता है, उसे पहले ही पता होता है कि मूवमेंट आने वाली है। हर एक सिनेरियो देख रहा है ना। हम अपनी आंखों से कभी यहाँ पर नहीं बोल सकते यार सब कुछ तो फ्लैट सही है, ऐसे कैसे बाय कर लूं। बट यस, वहां पर कोई ना कोई लॉजिक जरूर है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। अगर उसने वहां पर आपको बाय सिग्नल दिया है तो अब वो सिग्नल कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर कितनी प्रेडिक्टिबिलिटी है, ये चीजें हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और वही जो मैंने आपको कहा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टॉक अवेलेबल है तो आपको जरूर 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 ऐसे स्टॉक के ऊपर अपनी बहुत अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। आपको उसके अंदर एक काबिल तारीफ प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। In the same way, we can find the deep Alcantara stock from the basic material. It's a chemical stock, and it also was located on the top of the forecast of the 3 months forecast time frame in the large cap universe. And we can see that the timing of the algorithm was pretty amazing. And after the stock went down in the end of June, the algorithm gave a positive forecast for these stocks for 3 months ahead, and we can see that these stocks made 28% if we are starting it from the 7th of June, 3 months ahead. So this is also a great timing of the AI algorithm. सो एक एग्जांपल हमें दीपक नाइट्रेट का भी देखने को मिल रहा है। 7th ऑफ जून को एआई ने प्रेडिक्ट किया कि स्टॉक में तेजी होगी और 28% की तेजी 3 महीने में, 3 मंथ्स में ही इसने प्रेडिक्ट किया था। 3 महीने में 28% की तेजी। हमें बैंक में 6% इंटरेस्ट मिलता है साल का, 6%, 6% इन अ ईयर, और यहाँ हमें मिल रहा है 28% इन जस्ट 3 मंथ्स। तो अगर बैंक ब्याज से जोड़े तो ये तो कभी भी ब्रेक हो ही नहीं सकता। और अगर हम बात करें इंडाइसेस की भी, ठीक है, बेंचमार्क से भी हम अगर कंपेयर करें तो निफ्टी की जो रिटर्न है हमारी 13-14% की आती है। आप 15% लगा लो, अब 15% की रिटर्न और 28% की रिटर्न से 3 महीने में जमीन आसमान का फर्क है। सो ठीक है, नॉट लाइक दैट कि हर एक स्टॉक ऐसा परफॉर्म करता है, बट हाँ जो परफॉर्म कर रहा है, जो उसको जिसमें हमें भी फील आएगा ना। आपको इसने प्रेडिक्ट कर दिया, आप कब तक अवॉइड करोगे? आप एक दिन अवॉइड करोगे, नहीं 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 जाएगा ऊपर, आप 2 दिन करोगे, 3 दिन, आपको लगेगा कि यार वो शेयर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है उसके पीछे, तो धीरे धीरे ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा और आप खुद मानेंगे कि यस, एआई हमारी हेल्प कर सकता है। And in the same way, we have the stocks that we talked about earlier, Gold Gene, that we're seeing also with the highest predictability and one of the highest signal. And this is pretty interesting because on the 28th of August, nothing really happened in the stocks for a few days. But then in the beginning of September, we saw a big rise with the stock that actually performed 20% in 7 days. And the algorithm provide us this good long position on the industry stock, good journey. I hope I'm saying it right. सेम गोदरेज इंडस्ट्री के स्टॉक में भी हमें देखने को मिल रहा है। 28 अगस्त को इसने बोला कि स्टॉक 7 डेज में ऊपर चला जाएगा। 28 तारीख फ्लैट, 29 तारीख फ्लैट, 30 तारीख फ्लैट, कुछ भी नहीं हुआ। 1 तारीख से स्टॉक ने मूवमेंट मारी और सीधे 20% के रिटर्न हमें देखने को मिल गए मात्र 2 से 3 दिन में। तो इस तरह के फोरकास्ट जो है मतलब अब ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यार आप
तूने बोला था एआई के ऊपर जाएगा, नहीं गया नहीं गया नहीं गया, लेकिन कब तक नहीं गया? उसने 7 दिन बोला था, 2 दिन 3 दिन नहीं परफॉर्म किया, उसके बाद परफॉर्मेंस आप देख सकते हो सीधे 20%। तो टेक्नोलॉजी है, मतलब टेकी हमें भी होना पड़ेगा, और मार्केट तो टेकी है ही। हम किसी जमाने में अगर हम मार्केट को ही देख लें, हम कहाँ T+30 की सेटलमेंट में घूमते होते थे, आज हम कहाँ T-डे की सेटलमेंट पे आ चुके हैं, सेम डे स्टॉक सेटल हो रहे हैं। पहले कागज के शेयर्स, फिजिकल शेयर्स लेके हम लोग घूमते रहते थे, आज जो है हमें शेयर्स जो है वो डीमेट में होते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे मार्केट ने हमेशा ही एक्सेप्ट की है, ठीक है, तो हम इस टेक्नोलॉजी को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और जरूर हमें इसका फायदा आने वाले टाइम में, इसका बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा हमें। मतलब अगर हम इस चीज को आज निगलेक्ट करते हैं, मतलब या इससे दूर भागते हैं, तो ये शायद हमारी ही गलती होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें इस चीज के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। All right, then I wanna show you something that we showed you in the last webinar in 28th of July, 29th of July. We gave you those best stocks for the next month. It was a 1 month time frame, and now we can see those top 3 stocks that we provided in the last webinar for a month ahead. We can see the amazing return that those 3 stocks made with 14%, 29% of Optimus, and 21 of Deep Akfed. It all has highest one of the highest signals. They are located at the top of the table, which means that have a really high signal, and the predictability also is pretty good. And in the bottom, we can find the MOIL stock that has a negative signal. The strongest negative signal, we can find it here. And these stocks went down by 20%. I know, I think the Indian investor cannot short in the Indian market, but they still, if they were holding those stocks that are located in the red part of the table, they know they should have sold it and not hold it for the rest of the month, and could have saved them a lot of money. And so the algorithm gives us 2 things. One, the best opportunities to long and to buy for the next month, and the other one is to avoid stocks, some several stocks that in the red part of the forecast. सो हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो वेबिनार हुआ था 29 जुलाई को, वहां पे जो हमने स्टॉक्स दिए थे कि 1 महीने के लिए हम देखते हैं कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऑप्टिमस, बी बॉक्स और दीपक फर्टिलाइजर, ये 3 शेयर्स थे जिनमें अपसाइड की स्ट्रेंथ, काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, टॉप सिग्नल्स थे। सो आप देख सकते हो लगभग लगभग 15% से लेके तो 30% तक के रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। वहीं बात करें टॉप लूजिंग स्टॉक की, इसी पेज पे टॉप लूजिंग स्टॉक था मोबाइल, तो एमआईएल के स्टॉक में 20% की गिरावट देखने को मिली है। अगर ठीक है, इंडियन मार्केट में शॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई जा सकती इक्विटी सेगमेंट में, बट अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट को अपनी उस टाइम भेज दिया कि मोबाइल को जो है ये डाउन साइड दिखा रहा है, सो वहां पर हमें 20% की तो बचत हो गई होती। ठीक है, तो अगर आपका पैसा डूबने से भी बच रहा है तो इट्स बचत है ना, मतलब पैसा बच ही रहा है हमारा जैसे भी। सो इस तरह के सिग्नल्स जो है ये जनरेट करता है, और सब रियली अ ग्रेट प्रोडक्ट। Yeah. Please, Ben. Yeah, so again, I see some questions that you ask that some of you wants to buy only the 1 year, or they want to buy the 1 year or the 3 month. In this price, you get all the time frames. You get on a daily basis all the time frames and all the sectors. If it's a mid cap, if it's small cap or large cap, or the customized portfolio, everything is included in the 799 Indian rupee per month
that you get through the Shoonya platform. Again, I'll repeat, you get a daily forecast in different stocks, 6 time frames, small cap, mid cap, large cap, the indices forecast for all the time frame, and the customized AI portfolio. And one more important thing, instead of looking for stocks in the news or in the papers, or trying to find some interesting stocks with the different places on the web, the AI, this advanced technology providing you the best stocks every day. If you want to trade today, it's providing you the best stocks that you can buy today for the next week, for the next month, for the next year. And you can do it all through the Shoonya platform in this special price, just for today, introduction price of 799 Indian rupee per month. And this is a fixed price, right, Ben? This is another question that I see. It's a fixed price, 799 INR per month. Another question that is repeating, people are asking how to subscribe. So please use the webinar chat. Open the webinar chat window. There is a link there. Use this link in order to subscribe. Right? Yeah, and you can get it today. If you subscribe right now, you can see you'll be getting the tomorrow forecast for the Indian market. So feel free to do it right now. And in the next few slides, we're going to talk about what's going to happen in the markets and what the algorithm sees for the future for September. But this special webinar is, of course, an introduction price for today only. So जो प्राइसिंग है ये इंट्रोडक्शन प्राइस है 799 का, ये फिक्स प्राइस नहीं है। और सभी तरह के फोरकास्ट आपको इसी सेम प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप पूरा होलसेल पैकेज आप ले सकते हो सिर्फ इतनी 799 की प्राइस में। आज और अभी के लिए ये प्राइस है। सो इन फ्यूचर यस प्राइसेस बढ़ सकते हैं और कम तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये पहले ही बहुत चीपेस्ट प्राइस पे आपको अवेलेबल हो रहा है। वर्ल्ड में इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा है। आपको आइनो फर्स्ट की वेबसाइट से ही ये $200-250 का लेने को मिलेगा और उसके अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी। शून्य प्लेटफॉर्म पे आपको होलसेल पैकेज मिल रहा है 799 पर मंथ पर। ठीक है, सो दिस ओवर टू यू मैन। All right. So before we're going to see what's going to happen in September and the rest of September, we're going to talk about really briefly about the strategies that we provide to many of our institutional clients. This strategy is based on the AI algorithm, and we have several strategic automatic strategies, such as the combined strategy, the long-only strategy, some of the sector strategy. It's a long and short. And I'm going to go through just one of the strategies that's actually combining a few tiers. If it's the level 1 tier, just the main sectors, industries, and 5 stocks from the US market. It's also adding 10% of the SPY or the S&P 100. And this strategy actually performed 370% in 4 years, while the S&P did 61%. We can see the yearly stats here to the right, and we can see the performance of the strategy each and every year. The orange line is the S&P 500. And just for giving you a small glimpse of what are the capabilities of the algorithm. This is the last rebalance of the strategy. We see that this happened in 21 in August. The next rebalance is in 18 of September. Right now, the S&P is almost down by 4%.
The strategy is down by 2%. It's outperforming the market and focusing basically on the real estate sector that was the best sector from the US market. So this is a small overview glimpse of the abilities of the strategies that the algorithm is providing to our institutional clients. सो यहाँ पर जो है AI पावर्ड स्ट्रेटजीज भी हैं अवेलेबल ना, इज नॉट फॉर इंडियन मार्केट, बट अगर हम समझें कि किस तरह से जो है प्लेटफॉर्म मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हेल्प कर रही है बेंचमार्क को बीट करने में, मतलब AI भी पावर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का यूज करके आप बेंचमार्क को कितना पीछे छोड़ सकते हो। ये बेंचमार्क जहां पर 10 से 15% के रिटर्न दे रहा है, आपको AI की स्ट्रेटेजीज जो है वो 60% के रिटर्न दे रही है। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि हम कितना उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और किस तरह से हम इसका AI का यूज करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और ज्यादा बेहतर बना पा रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें या किसी में भी ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो इंडाइसेस की है और ब्लू लाइन जो है वो AI पावर्ड जो भी स्ट्रेटेजीज हैं उनकी है। तो आपको एक आप तेजी देख सकते हो उसमें कितनी ज्यादा है और इंडाइसेस में कितनी कम है। सो अगर हम बात करें पोर्टफोलियो ट्रैकर की, तो जहां पर S&P डाउन है वहां पर भी जो आइनो फर्स्ट की स्ट्रेटेजीज हैं वो आउट परफॉर्म कर रही हैं। मतलब मार्केट के डाउन साइड को एलिमिनेट करने की पावर रखता है AI। आपको ऐसे स्टॉक सजेस्ट करेगा जो गिरते हुए बाजार में भी आपको एक अच्छा मूव दे सकते हैं, या फिर अगर बाजार गिरने वाला है तो आपको किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बचाना है वो भी सजेस्ट करता रहेगा। ओवर टू यू। All right. So another examples for different packages and different universe that the algorithm can provide. If it's the US stocks, we can see that the algorithm is actually providing us the best stocks from the US market to buy for 1 month. And we can see the results to the right. This is a 3-month. For example, 3 months forecast that generated on June 5th, and we can see the stock that the algorithm actually provide us to buy for those 3 months. We can see the performance here and the S&P returns in the bottom. And we also have a commodities forecast, different commodities, more than 75 commodities that the algorithm is providing a daily forecast on, and currencies as well, and more than 100 currencies that the algorithm is providing a daily forecast for them as well. सो एल्गोरिदमिक फोकस जो है वो आपको जैसे इंडियन स्टॉक्स में होते हैं वैसे यूएस स्टॉक्स में भी मतलब डिफरेंट एसेट क्लास में आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट इंडाइसेस में देखने को मिलेगी। हर 50 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस पर आइनो फर्स्ट के प्रेडिक्शंस देखने को मिलते हैं। सो उसमें यूएस स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं। सो नॉट फॉर इंडियन क्लाइंट्स, बट हाँ मतलब एक आपको ये दिखाया जा रहा है कि उस प्रोडक्ट की कितनी काबिलियत है कि वो आप सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं वर्ल्ड की मार्केट में काम कर रहा है। और बड़े बड़े फंड हाउसेस, इन्वेस्टमेंट हाउसेस, फैमिली ऑफिसेस जो हैं इसको यूज कर रहे हैं, हेज फंड इसको यूज कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेहतर बनाने के लिए। सो यस, ऑब्वियसली इंडिया में भी हमें इसका यूज करना चाहिए। और आप देख सकते हो कि किस तरह कमोडिटी पर भी ये दिखा रहा है। अभी बाहर की मार्केट्स में ये कमोडिटी करेंसी सभी कुछ बताता है, इंडियन मार्केट में अभी इतना अवेलेबल नहीं है।
सिर्फ स्टॉक्स पर ही अवेलेबल है, बट आने वाले टाइम पर हम लोग जो है ऐसे फीचर्स लेके आएंगे कि ये इंडियन मार्केट में भी एफएनओ पर, कमोडिटीज पर, करेंसीज पर अपनी जो है प्रेडिक्शंस जो है वो दे सके. And in the same, wait, I'm seeing. Ron, Yes. you're muted. We see that many people are trying to subscribe, and the servers are a bit busy. We are working, Shoonya team is working to resolve this issue. So for those of you that try to subscribe and didn't succeed, please try again in a few minutes. Yes, कुछ यूजर्स को इशू आ रहा है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, शायद पेमेंट लिंक्स वगैरह पे कुछ इशू है, क्योंकि काफी लोग यूज कर रहे होते हैं, तो इस वजह से कई बार रश की वजह से जो है सब्सक्राइब नहीं हो पाता है. तो रिक्वेस्ट है आपसे, एक बारी और ट्राई कीजिएगा. टीम हमारी वर्किंग कर रही है इसके ऊपर, तो आपको इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा. कोई ऐसा इशू नहीं है, बस ड्यू टू रश थोड़ा सा वो कई बार पेमेंट पेज वगैरह ओपन होने में दिक्कत हो जाता है. बाकी दैट्स ऑल ओके. Yeah, it's in the same way we have different kind of packages. If it's the world indices, if it's the European stocks, Japan, Italy, Australia, Hong Kong, Shanghai, and Shenzhen, and of course the Indian market. As Yaron said at the beginning, we have more than 50 stock exchange that we provide a forecast at, and now I'm gonna talk about what happened in the our last webinar. And before we're gonna see what's gonna happen in September, I have an oath from the last webinar, and we can see that the forecast that we provide on the 29th of July in our last webinar. This was taken from our last webinar, and we can see the performance of those indices during August, and we can see that the first index that was in the top of the list with the strongest signal and one of the best predictability is the Nifty IT, the tech index of India, and it made 8%, while the Nifty 50 that was also positive, we can find it here, NSCE did 2%, and of course we can see the Indian VIX in the bottom, which means that the volatility went down, and actually, as we can see in the last month, the volatility did went down, as the algorithm predicted. And we can see other leading indices that the algorithm liked. If it's the Nifty 50 leverage one, if it's the Nifty 50 or Nifty 500 Sharia, Nifty 50 value that located on the top of this table, all made some significant return and outperform the Nifty 50. So this what happened in the last month, and in the next slide we're going to see what's going to happen in September. Yeah, so सेक्टर्स एंड इंडाइसेस पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि आइनो फर्स्ट की प्रेडिक्शंस होती हैं. सो निफ्टी आईटी प्रेडिक्ट किया था आइनो फर्स्ट ने लास्ट मंथ, वहां से 8.16% की तेजी. निफ्टी 50 पीआर 2 टाइम्स लीवरेज पे भी तेजी. शरिया इंडेक्स में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है. निफ्टी 50 में भी हमें लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है, और इंडिया विक्स में हमें एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है. मतलब आपको हर तरह की प्रेडिक्शन, चाहे वो स्टॉक्स पे हो चाहे वो इंडाइसेस पे हो, अभी अवेलेबल है शून्य के प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिवली विद आइनो फर्स्ट. और सारी एआई पावर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की यूनिक मेथोडोलॉजी से हम ये सारा कुछ रिसर्च लेके आते हैं आप लोगों के लिए. और ये जो भी प्रेडिक्शंस है डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं, रेगुलर अपडेट होती हैं. आपको रोज नए शेयर्स देखने को मिलेंगे, और जो भी बेस्ट शेयर्स होंगे वो आपके लिए टॉप पर अवेलेबल होंगे. 10 शेयर बाय के, 10 शेयर सेल के,
आपको हर एक टाइम फ्रेम पे हर एक कैटेगरी में। ओवर टू यू। All right. And let's see what the algorithm thinks about September. And we can see that the information technology sector, this is taken from, of course, the Shoonya platform in the IKF section. And we can see that the information technology sector is one of the leading sector, leading indices in the Indian market. We can also see the Nifty small cap being in the upper side of the table. With that, we're still seeing some volatility. The Nifty VIX is located in the upper side of the table. So the market might be volatile in the next month. But still, we are seeing a lot of positive indices, Nifty Sharia also, and Nifty Pharma also looks quite positive. Those are the leading indices for the next month in the Indian market. What's the algorithm actually sees. And this, of course, you can also get by subscribing to the service and clicking on the indices button and see what's the algorithm thinks on a daily basis, even for 3 days, 7 days, and the other time frames that are located on the top right of the table. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स के ऊपर भी आपको फोकस मिलती है। ये शून्य के ऊपर से लिया हुआ, शून्य वेब पोर्टल से लिया हुआ स्क्रीनशॉट यहाँ पर यूज किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट ग्रीन कलर, मैंने आपको एक बोला था। तो यहाँ पर आपको डार्क ग्रीन के साथ दो लास्ट में आपको दो लाइट ग्रीन देखने को मिल रहे हैं। सो वहां पर कम तेजी के चांसेस हैं, रेस्ट जो है वहां पर आपको अच्छी तेजी का चांस देखने को मिलेगा। तो ये जो एआई है ये हर चीज के ऊपर प्रोडिक्शन देता है, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो इंडाइसेस हो। और डबल कंफर्मेशन के लिए आप पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जा सकते हैं और साथ में उसका इंडाइसेस भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स क्या कह रहा है। और इंडेक्स की तेजी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि एक ही सेक्टर से हो सकता है मल्टीपल कंपनीज निकल के आ रही हो, तो आपको मतलब पूरे सेक्टर पे ही बुलिशनेस देखने को मिल रही है। वो सारी चीजों का यूज करके आप एक अच्छा इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। ओवर टू यू मैम। Yes, and if you want to know what are the best scripts for the next month, you have to log in and subscribe to the service, and get again the 6 time frames of the small cap, mid cap, and large cap, the indices forecast, and the customized AI portfolio holding for 799 Indian rupee per month, just for the following day, and special for the webinar and Shoonya clients. We're providing you a special price for all what we just saw and experienced, and take advantage of this special webinar and special sale, and take that special price for you. Okay, and let's start to answer some questions. Okay, so when the forecast is being updated, the forecast is being updated every morning before the market opening. So you should expect daily updates. Log into your platform every morning when you're waking up, basically before the market opening, and you will receive the best opportunities for the different time frames and also for the different investment universes, the small cap, the mid cap, and also the large cap. Okay, we are getting an update from the technical team. In order to subscribe, you need to log in by using the link that we shared in the chat, and then click on IKF and click on subscribe. That's it. 3 easy steps in order to subscribe. Just log in by using the link that you have right now on the chat.
type your credentials, choose I know first, and that's it. From that point, you're going to receive the daily prediction in the platform. Okay, more questions, Ben. Yeah, we have a Okay, lot so of questions. Yeah, Keshav, so go ahead. no, please. But I would like to just translate this. So एवरीथिंग जो भी आपको मिल रही है वो 799 पर मंथ पर अवेलेबल है। शून्य प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आप AI पिक्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3 इजी स्टेप्स में आप जो है सब्सक्रिप्शन ले लेंगे शून्य पर आइनो फर्स्ट का, और जो भी अगले मंथ के लिए टॉपिक्स होने वाली है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ की टॉपिक्स आपको वहां पर ही देखने को मिलेंगी। 799 इज नॉट अ बिग अमाउंट। एक बहुत अच्छी प्राइसिंग पर आपको एक यूनिक प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, और जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत 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 बेहतर बनाने की काबिलियत रखता है। सो यस, हमें अपनी स्ट्रेटेजीज लगानी है, हमने अपनी स्टडी लगानी है, सब कुछ हमने करना है, बट हाँ, हम ज़्यादा स्टॉक्स पे नज़र नहीं रख सकते हैं। तो स्टॉक्स पर नज़र रखने के लिए हमने एक AI रखा हुआ है जो कि आपके लिए हेल्प करेगा टू फाइंड आउट दोज स्टॉक्स जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं, अच्छे अपसाइड्स दिखा सकते हैं, अब बड़े बड़े डाउन साइड्स से आपको बचा सकते हैं। ओवर टू यू Okay. गाइस। यस। Yeah, I see a lot of people trying to still trying to subscribe, and again, because of it's really busy, and a lot of people trying to subscribe. Some of the servers are not working, so please be patient. It will work soon. Any other question that I see, or which time frame is the best? Again, you have to focus. If you are getting all the time frames, all the 6 time frames, the time frame with the best predictability filters, or the highest time frame, the longer time frames of 1 month, 3 months, and 1 year has the highest predictability indicators. So we basically tell and suggest people to focus on those time frames, on the longer time frames, and again, searching for the highest predictability levels. Right. सो जो क्वेश्चन है कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, सो टाइम फ्रेम आपको सभी अवेलेबल है। आपने सिग्नल और बेस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ जाना है, जिनके बेस्ट सिग्नल अवेलेबल है, जिसकी प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी है, और ऐसे स्टॉक्स जो कि हर एक टाइम फ्रेम में अवेलेबल है, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आपने ज्यादा नजर रखनी है। Yes. Do you predict other market besides the Indian markets? Yes, we are providing daily prediction for the Indian market, but also for additional 50 other stock exchanges, including the stock exchange, the US stock exchange, of course. Is it possible to use it for option trading? We are generating prediction for stocks, for equities, and for indices. If you can convert it for options, you can definitely use the daily forecast. Okay, let's see other questions, Ben, that you want to take. Regarding the exit strategy and the take profit. It really depends. I see that some people are asking what is the exit strategy. It really depends on your risk appetite, basically. You can follow the time frame, and Ben, if you can move to the example with the 1 month prediction of from the last webinar. So basically, if we're taking the stocks that we have recommended in the previous webinar, you could basically choose any stocks from this list, and the take profit is really depend on you. You can
feel comfortable with 10% gain or 5% gain, or wait to the entire time frame. So it really depends on you. In terms of the exit strategy, you can also utilize the time frame. If you choosing stocks for a period of 1 month, you can continue and hold the stocks until the end of the 1 month. One thing that Ben said today that is very important: utilize the indicators that the algorithm is generating. Try to focus on the most predictable stocks, the stocks with the highest predictability, the second number that you see within each cell. Utilize the signals as well. Try to focus stocks that combining strong signals as well as strong ROI predictability. It's very important, and it will help you to pick stocks that will outperform, basically. Let's see, more questions. More questions. Ben, do you see any other question that you would like to answer? Let's see, we answered most of them. Let's see if I can find. If we're providing stop loss, I see this question many times. No, we don't provide a specific stop loss or take profit. We provide you the day you should buy the stocks and the time frame you should hold it. If you're seeing a stock in a multiple time frame, like for example in the 3 days, 7 days, 14 days, it's even better. You can hold it for this entire time. Actually look for stocks that are in multiple time frame. It's bringing up the success rate of this specific position. But we don't provide a stop loss because each and every investor has a different risk level, and you should use it for yourself. The same goes with the take profit. So because we don't know your risk level to each and every one in on specific risk level, you should determine this the stop loss by yourself and the take profit as well. But generally speaking, if the algorithm gives you a prediction for 1 month or for 2 weeks, you should stay in the stock for that time period. It's even easier with the Shoonya app because after you're buying the stock, you can just watch your portfolio and see if the signal is still green and good, and you can keep hold the stock. If it's gone red, you just sell it. Shoonya is providing you an amazing tool that you can track your own portfolio using the AI. So please do so. Yes, Right. so stop loss. Yeah. Please, या please. स्टॉप लॉस को लेके सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप शून्य प्लेटफॉर्म पर अपना शेयर खरीदिए, वो आपकी होल्डिंग्स में आपको शो होगा, और जब आपको वो आपकी होल्डिंग्स में जब आपको लगे कि अब ये रेड मार्क में आ गया है, उसी टाइम उस शेयर को बेच दीजिए और अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सो ये स्ट्रेटजी से ही जो है हम इसको बीट कर पाएंगे, क्योंकि किसी तरह के टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस जो है वो उसकी कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि एआई का काम है आपके लिए फिलहाल स्टॉक सजेस्ट करना कि इस स्टॉक में अपसाइड या डाउनसाइड जाने का पोटेंशियल है, और हमारा काम है उस पोटेंशियल को पकड़ना। इसलिए मैंने कहा था कि हमारी स्टडी, हमारी रिसर्च जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी इस प्रोडक्ट को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में लेवरेज करने के लिए। Yeah. Another tip: try to utilize all the time frames that the algorithm is providing. Try to choose stocks that appearing in multiple time frames, not only for the short term but also for the long term, also in the midterm. Try to choose stocks that appearing in multiple time frames, maximum time frames as possible. Yes.
सो वही टिप है कि आपने जो भी स्टॉक्स मल्टीपल टाइम फ्रेम में अवेलेबल हैं उन स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में है और जब बार बार जो स्टॉक आपको शो हो रहा है सामने, दैट्स रियली अ गुड स्टॉक। Yeah, I see some people are still struggling with the subscription, but I see some of them they have succeed. It's gonna be fixed really soon, and we are holding this special price for you for the entire day. So please keep trying, subscribe in a few more minutes. We're seeing some of the problem has actually been fixed, so it will be easier soon. So, other question that we are getting. Yes. Is it possible to get commodities prediction? So, as Ben said, yes, we do offer also for forecast for over 50 different commodities, including gold, silver, oil, and basically every commodities that is out there. Yeah. And yeah, there are still issues. We just got an update from the IT team. There is a huge traffic on the servers, so we are facing some problems. But everyone that would like to join will be able to do that. No worries. Please use this link and try again, and you will be able to do that. All right. Okay. Good. So, Okay. yeah, it's really a great webinar. So, Wow, 2 hours. We're breaking the yeah. records. Yeah, it's more than 2 hours. Yeah, it's new record. So yes, very insightful. Uh, People know a lot about the product and about the market and market scenarios, how they can use this. They also know what are the signals and predictabilities, how they can use that. So it's really a great product, people. So please try this once. You will really loved it. Yeah. Great. Thank you very much, Keshav. And Yeah. as Thank always, you. thank you we are really appreciating your translation here. थैंक यू अरुण सर, थैंक यू बैन, थैंक यू ऑल द ऑडियंस जो भी जिन्होंने भी अपना टाइम निकाला शून्य एंड आई नो फर्स्ट के इस वेबिनार के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर लव फॉर शून्य एंड फॉर आई नो फर्स्ट। सो विल रियली आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स और भी हम लोग लेके आते रहेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को, इन्वेस्टमेंट जर्नी को और स्मार्ट बनाए। दिस आर द smart product with smart intelligence. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Thank you very Okay. much. Thank you very much, guys. Bye, guys. Thank you. Bye Bye bye. bye. Thank you.